stockologist. So we are back with a new video on budget series. Last video में हमने डिस्कस किया था यूनियन बजट फॉर इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023, कौन से थीम्स और सेक्टर्स हमें फोकस में रखने चाहिए फॉर दिस ईयर. आज उसी वीडियो सीरीज़ को हम एक्सटेंड कर रहे हैं विद अ न्यू एपिसोड, जहाँ पे हम एक पर्टिकुलर सेक्टर को डिटेल में एनालाइज करेंगे, कंपनीज और स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की ट्राई करेंगे जिसमें मैक्सिमम बेनिफिट्स हम ले सकते हैं इस साल में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कौन से थीम्स और सेक्टर्स हमें आइडियली फोकस करने चाहिए बेस्ड ऑन द बजट. सो दिस वर द थीम्स जो हमने आइडेंटिफाई किए थे: इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स, डिफेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड क्लीन एनर्जी, टेलीकॉम एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, पाइप्स एंड फिटिंग्स, जेम्स एंड ज्वेलरी एंड फिशरीज. सो इन सेक्टर्स में हमें मोमेंटम दिख सकता है दिस ईयर में. वी कैन सी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे इन सेक्टर्स में ड्यू टू द फोकस ऑफ गवर्नमेंट इन दिस सेक्टर्स. आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप हमारा लास्ट वीडियो देखिए. इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो आउट. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. सो इन दिस वीडियो हम आज बात करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स की. सो बेसिकली बजट में जो अनाउंसमेंट्स हुए हैं उसको पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या अनाउंसमेंट हुए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर को बूस्ट करेंगे. गवर्नमेंट हैज सेड कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को राइज करने वाले हैं वो दिस ईयर, विच इज़ गोइंग टू बी मैसिव इंक्रीज ऑफ 35.4%. 4.54 लाख करोड़ से बढ़ा के 7.50 लाख करोड़ कर दिया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023. पीएम गति शक्ति. Now this is a very big announcement. पीएम गति शक्ति जो गवर्नमेंट ने अक्टूबर 2021 में अनाउंस किया था. तो बेसिकली ये एक मास्टर नेशनल प्लान है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ट्राई कर रही है टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट इन इंडिया एंड ब्रिंग डाउन द डिलीवरी लीड टाइम्स. और ये करने से दे आर फोकसिंग मोर ऑन बूस्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया सो दैट एक्सपोर्ट्स को और बढ़ा सकें. So basically पीएम गति शक्ति में the government is planning to build infrastructures in terms of road, highways, railway networks, more rails, cargo terminals, logistic parks, multimodal logistic parks, airports, ports. So इनका वो network बनाना चाह रही है so that they can bring down the delivery lead time as well as the overall cost. Government has announced in the budget कि national highway networks will be expanded by 25,000 kilometers in the financial year 2022-2023 और जिसके लिए 20,000 crore will be mobilized for the same. Contracts will be awarded for multimodal logistic parks at 4 different locations through PPP model. So 4 जगह पे multimodal logistic parks government बनाने वाली है. 100 PM गति शक्ति cargo terminals will be built through multimodal logistics to be developed in the next 3 years. और 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स गवर्नमेंट ने अनाउंस की है जो नेक्स्ट 3 इयर्स में दे विल बी मैन्युफैक्चरिंग. सो बेस्ड ऑन दिस अनाउंसमेंट्स देयर आर सर्टेन सब सेक्शंस जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स सेक्टर में, विच आर दिस. सो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स बहुत ही वास्ट सेक्टर है, तो उसको हमने फर्दर ब्रेकअप किया है कि दिस आर द सब सेक्टर्स जिसमें हमें बेनिफिट्स मिलने वाले हैं ड्यू टू बजट. वी कैन सी दैट in the coming times the stocks in this sectors will have some momentum. So आज हम बात करेंगे सीमेंट्स कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स की. In the upcoming videos we will discuss iron and steel, engineering constructions, railway as well as logistics. So let's start with cement and construction material in this video. So there are basically some companies that we have identified जो हमें लग रहा है कि will have the majority of benefits due to the budget announcements for cement and construction material. Now since capital expenditure will increase and government is focusing to increase the infrastructure, so the basic need in terms of infrastructure building is the raw material like cements and construction materials. So naturally companies who are into this sector उनका top line improve होगा, उनका revenue improve होगा, and the company who are optimizing their performance will draw maximum benefit out of this announcements. So one of the companies that we think will have an advantage is Ultratech Cement Limited. So let's understand them. So for each of these companies we will look into the both aspects. हम उनके fundamentals भी देखेंगे और after looking into their fundamentals we will also discuss the technical aspects जहाँ पे हम levels को identify करेंगे, valuations को identify करेंगे और किस level पे हमें buy करना चाहिए और क्या हमारे targets होने चाहिए. So let's start with the Ultratech Cement.
Now as we can see the company's top line बहुत ही अच्छा improve किया है, almost 11.8% CAGR growth हुआ है last 5 years में, almost double हो गया है as compared to 2017 financial year जो उसका top line figure था. If we talk about Ebitda margins, so we can see that Ebitda margin has grown with a significant improvement of 21% CAGR growth हमें दिखा है last 5 years में, and almost double से ज़्यादा growth है as compared to 2017. So clearly यहाँ से हमें पता चल रहा है कि the company is managing their expenditure very efficiently, due to which they are able to transfer the net sales into EBITDA. वहाँ पे ज़्यादा growth वो ला पा रहे हैं, as we can clearly see it from here. If we talk about the bottom line performance, we can clearly see that the profits are also improving. They have grown by almost 19% in the last 5 years CAGR, and since the net profit has grown, the company has EPS has also grown by a CAGR of 17.6% in the last 5 years. So both the top line and bottom line have been performing well. Company in terms of their sales, they have been improving. In terms of transferring their sales to bottom line is also improving. So the both EBITDA, profit margins and everything in this fundamental analysis, we can see that for Ultratech वो improve हो रहा है. Now if we talk about the return of capital employed for the company, the 5-year average return on capital employed is 12.4%. The ROC is continuously increasing year on year basis. हर साल कंपनी का ROC बढ़ रहा है. Currently it is somewhere around 15% for the year 2021, which is higher than its 5 years average. Normally ROC for a company should be more than 15%. Ideally 15% से ज़्यादा होना चाहिए. हमें उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनमें ROC is more than 15%. So on that regards also we can see there is no problem in this company. Talking about the cash flow, so as we saw that bottom line was very good. Bottom line बहुत ही अच्छा था कंपनी का. So they are naturally able to generate more cash, as you can see. So the cash from operation has been improving by and has been growing year on year basis. Last 5 years में it has grown by a CAGR of 25.7%. But when we talk about cash and cash equivalent at the end, वहाँ पे थोड़ा we can see that the company is not that consistent. The reason being that company expenditure of cash in terms of expenses and finances is something they are not able to manage, due to which जो operations से वो cash generate कर पा रहे हैं वो actually वो contain नहीं कर पा रहे consistently. Talking about the debt and the liquidity of the company, हम देख सकते हैं कि long term debt year on year basis पे घट रहा है. Last 5 years में 15% CAGR से उन्होंने अपना long term debt घटाया है. बट वाइस वर्सा अगर हम शॉर्ट टर्म डेट्स को देखें, बोरोविंग्स को देखें, तो इट हैज़ इंक्रीज बाय अ CAGR ऑफ 20% इन द लास्ट 5 years. नाउ दिस इज़ नॉट अ गुड साइन. इट शोज़ कि आइडियली आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़्यादा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कम होना चाहिए. नाउ शॉर्ट टर्म बोरोइंग बढ़ रहा है आपका, तो इट शोज़ कि आप अपना वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं कर पा रहे हो, विच इज़ ऑल्सो एविडेंट इन द करंट रेशियो. एज वी कैन सी, ऑल्दो करंट रेशियो आपका 1 के ऊपर है, बट इफ़ यू लुक एट द 5 years करंट रेशियो ऑफ द पर्टिकुलर कंपनी, हम देख सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उसका करंट रेशियो कम होता जा रहा है. सो इट क्लियरली शोज दैट कंपनी इज नॉट able to meet its short term liabilities as compared to its short term assets. Talking about valuation of the company, currently company बहुत ही अच्छे valuation पे available है. As we can see that उसका P ratio has been going down. The P ratio of the company has been decreasing year on year basis. It shows कि earning के comparison में price इतना move नहीं हो रहा है. So basically earning is more and the price is less. If we talk about the current P of the company, currently company is being traded at a P of somewhere around 31.9, which is lower than its 5 years average, which is 37.4, but it is higher than the industry or the sector P of 28.6%. Talking about the cash flow, price by cash flow per share ratio, हम देख सकते कि the same is also decreasing. So as compared to the price, company is able to generate more cash flows, or the rate of cash flow per share is higher as compared to the increase in the price. So which is also very good indication. And talking about the enterprise value, so last 5 years में the enterprise value has increased by a CAGR of 16.5%,
which is much less than the actual increase of EBITDA of the company, which is 21.1%. So the enterprise का जो valuation बढ़ा है वो 16% से around roughly बढ़ा है, whereas company का EBITDA has improved by 21%. So that's also a very good sign. Now as we can see that the company's valuations are very lucrative, बहुत ही अच्छे valuation पे मिल रही है. तो अगर shareholder pattern हम देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि promoter holding is more than 50%. So ideally किसी भी company में invest करना है तो the basic criteria is कि shareholder the promoter shareholding should be more than 50%. FFIs का investment घटा है as compared to the last quarter Q3 2021 compared to the Q3 2022. We can see that FFIs का stake घटा है, whereas in case of DAI the stake has improved 10% as compared to the last quarter of 2021. Whereas in case of retailers or non-institutional investors, we can see that they have also increased by 2%. Now, if we talk about the overall assessment of the company from our side, fundamental में हम उसको 4 में से 3 rate करेंगे. Valuation, we will again rate them 3 out of 4. In terms of shareholding pattern, we would rate them somewhere around 2 out of 4. Top management, company का top management is very experienced and very clean management, so we will rate them 4 out of 4. Overall, we will give 3 star out of 4 to this particular company in terms of fundamental. Now let's try and understand the technical aspects. So let's move to the charts. So पहले हम देखते हैं कि कंपनी में क्या करंटली कौन से ट्रेंड में है, कंपनी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है या लेट्स से साइडवेज है. सो इफ यू लुक एट द लॉन्गर टाइम फ्रेम, हम देख सकते हैं कि द कंपनी वाज इन अ अप ट्रेंड. फ्रॉम मार्च 2020 जो कोविड के बाद क्रैश आया था, उसके बाद द स्टॉक वाज इन एन अप ट्रेंड. As we can clearly see, stock prices were above its 20 EMA, 50 EMA as well as 200-day moving average. But currently, we can see that currently the stock is currently being traded at somewhere below its 20 EMA as well as its 50 EMA as well as its 200 EMA. Also, अगर हम stocks और EMAs को देखें, moving averages को देखें, तो we can clearly see that now the moving averages, the fast moving averages like 20 and 50 day average flatten out हो रहे हैं, and the 20 moving average is slowly going below its 50 moving average. However, both of them are currently about its 200 day average, but 200 is slowly going down below its 50 average. So यहाँ से हमें clearly पता लग रहा है कि the stock is now slowly moving into sideways consolidation. Up till now it was into an uptrend, but now slowly it is moving into sideways consolidation. And also likely in the future it can convert into a downtrend also. So अब हम levels की बात करते हैं. So we can see that this is the support level जहाँ पे it faced resistance and then the level got broken. After that we can clearly see that it tried to break the same support zone 3 times in last 4 months, but it was not able to do so. So this is a very strong support zone. Currently वो अपने support zone पे है. So ideally इस level पे हमें इस stock को buy करने के लिए देखना चाहिए. So this is somewhere around 6,956 to 7,080 का level है ये. इस level पे definitely stock को buy करना चाहिए. अगर ये level break होता है तो next level जहाँ पे हम stock को again average कर सकते हैं, it is 5,950 to 6,070. अगर हम टारगेट्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म टारगेट इज समवेयर अराउंड 6 to 7%, which is 7,486 and above. Talking about mid-term targets, it would be somewhere around 7,940 and above. And if we talk about long-term targets, which could be in a time frame of 1 year or 1.5 years, हमारा टारगेट होना चाहिए 8,645 and above. Proceeding on to the next stock that we have identified, which is ACC Limited. अगर हम इसके टॉप लाइन्स और बॉटम लाइन्स और फंडामेंटल की बात करें, सो एज वी कैन सी कि यहाँ पे नेट सेल्स में इतना ग्रोथ नहीं है.
The last 5 years, the company has only grown by a CAGR of 3.3%, which is very less. But the company was able to transfer its top lines to its bottom line very efficiently. उन्होंने अपना expenditure और अपना production बहुत ही optimize किया हुआ है, due to which we can see that कि although top line में इतना growth नहीं है, but जब हम bottom line देखते हैं तो bottom line में बहुत ही significant growth है. We can see that EBITDA has increased by almost 11.9% in last 5 years. It has almost doubled as compared to 2017. Talking about profits, we can see year on year basis पे profits are also improving, and it has grown in last 5 years in a very significant CAGR of 19.3%. EPS also has grown with a CAGR of 19.1% in last 5 years. अगर हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 years एवरेज इज 15.2%. करंटली 14.5% है, बट 5 years का एवरेज इज 15.2%. एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का ROCE इम्प्रूव हो रहा है. सो अगेन दिस इज एज पर द स्टैंडर्ड्स इट शुड बी एवरेज 15% होना चाहिए. एंड एनी कंपनी जिसका ROCE इज नॉट 15% इज समथिंग विच बिकम्स रिस्की टू इन्वेस्ट इनटू. नाउ अभी तो हमने टॉप लाइन बॉटम लाइन को देखा. वी सी दैट there is some problem with the overall top lines, but as far as bottom line is concerned, the company is doing splendid work because अपना expenditure control कर रही है, अपना वो और प्रोडक्शन और कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर रही है, ड्यू टू विच वी कैन सी दैट दे आर एबल टू ट्रांसफर द टॉप लाइन्स टू बॉटम लाइन. नाउ लेट्स लुक इनटू द कैश फ्लोज. नाउ एज वी सॉ दैट कि बॉटम लाइन बहुत ही अच्छा इंप्रूव हो रहा है, नेचुरली उसका कैश फ्लो जनरेशन विल बी मच मोर हायर. So as we can see, cash from operations have improved by a CAGR of 12.4% in last 5 years. But if we talk about the cash and cash equivalent, we can see it has grown by a significant 34.1% in last 5 years. So last 5 years में company ने 34.1% से अपना cash flow बढ़ाया है. Now naturally the markets will reward the companies who generate cash. पेपर प्रॉफिट को कोई रिवॉर्ड नहीं करता है. सो इवन इफ यू हैव गुड बॉटम लाइंस, गुड नेट प्रॉफिट, EPS, बट एक्चुअली व्हाट मैटर्स इज कि आपके कंपनी के अकाउंट में कितना पैसा आप ईयर के एंड में जनरेट कर सकते हो. सो एज वी कैन क्लियरली सी फ्रॉम हियर दैट द कंपनी इज एबल टू एफिशिएंटली जनरेट गुड अमाउंट ऑफ कैश, ऑल्दो द टॉप लाइन्स आर नॉट दैट ग्रोइंग. We can see that once the top line will improve, naturally their cash flow will multifold. उनका cash flow और अच्छे से grow हो जाएगा. Now, why the cash and cash equivalents are improving? We can clearly see that the company has no debt currently, either long term or short term. कोई भी debt है नहीं. Company is completely debt free, due to which there is no obligations for interest payment or such, due to which all the money that they are generating in terms of cash, they are using it either for financing their growth or they are using it as a reserve. They have no liabilities in terms of interest. कंपनी का करंट अगर हम रेशियो देखेंगे तो इट इज़ समवेयर अराउंड 1.4. 5 years का एवरेज हम देखते हैं तो करंटली उसका करंट रेशियो इज समवेयर अराउंड 1.7, विच इज़ हायर देन इट्स 5-year एवरेज. Also ideally it should be 1, and it has been always above 1 in last 5 years, और slowly वो year on year basis पे improve भी हो रहा है. So company has no problems in terms of meeting its short term liabilities. Talking about valuation, अगर हम PE ratio को देखें तो year on year basis पे we can see that the PE ratio is decreasing, which is a good sign. That shows कि company का EPS बढ़ रहा है higher rate पे as compared to its price. टॉकिंग अबाउट द करंट PE जो कंपनी का है, इट इज़ समवेयर अराउंड 22.5 के PE पे वो ट्रेड हो रही है, विच इज़ लोअर देन इट्स 5 years एवरेज विच इज़ 26.6, एंड विच इज़ इवन लोअर देन इट्स सेक्टरल PE विच इज़ 28.6. सो दिस इज़ अ वेरी गुड वैल्यूएशन दैट वी आर सीइंग इन SEC करंटली. अगर हम एंटरप्राइज का वैल्यू देखें तो एंटरप्राइज का लास्ट 5 years में वैल्यू जो है वो 1.5% से ही ग्रो हुआ है, वेरेज कंपनी का EBITDA 11.9% से ग्रो हुआ है. सो क्लियरली द कंपनीज प्रॉफिट्स आर ग्रोइंग एट अ हायर रेट एज कम्पेयर टू इट्स वैल्यूएशन, विच शोज दैट द कंपनी इज करेंटली अंडर वैल्यूड. अगर हम प्राइस टू कैश फ्लो पर शेयर को भी देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वो भी घट रहा है, तो विच शोज दैट एज कम्पेयर टू द कैश फ्लो दैट कंपनी इज जनरेटिंग, उसका प्राइस उस रेट पे ग्रो नहीं हो रहा है, विच इज शोइंग दैट द कंपनी इज अंडर वैल्यूड करेंटली.
नाउ सिंस द कंपनीज वैल्यूएशंस आर वेरी गुड, हम देख सकते हैं कि FFI का शेयर होल्डिंग बढ़ रहा है एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर ऑफ ईयर 2021 Q3. करंट Q3 में हम देख सकते हैं कि 8.8% से FFI का स्टेक बढ़ गया है. DI का स्टेक घटा है बट वेरी नॉमिनल घटा है, वेरेज रिटेलर्स का जो स्टेक घटा है इट्स ऑल्सो नॉमिनल 0.8%. ऑल्सो द प्रमोटर होल्डिंग इज मोर देन 50% विच इज ऑल्सो वेरी गुड साइन. सो इस कंपनी का जो हमारा फाइनल असेसमेंट है वो ये कह रहा है कि फंडामेंटली वी वुड रेट द कंपनी 3 स्टार आउट ऑफ 4 स्टार. वैल्यूएशन वाइज वी विल रेट देम 4 आउट ऑफ 4. शेयर होल्डर पैटर्न के हिसाब से अगर हम रेट करेंगे तो 2 स्टार आउट ऑफ 4. मैनेजमेंट की बात करें तो वी विल रेट देम 3 आउट ऑफ 4 बिकॉज इनके जो करंटली नए CEO आए हैं, द कंपनी हैज अपॉइंटेड न्यू CEO इन Feb last year itself. Also the top management is not having the core experience of cement industry. They have a huge experience but from different verticals, due to which हमने उनको 3 rating दिया हुआ है यहाँ पे. But although the management is very clean, they have no cases in terms of any insider trading or any litigations on them. So overall हम इस company को भी 3 rate कर रहे हैं out of 4 star. Now let's look into their technical aspects. सो अगर हम लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम में इस कंपनी को अभी देखें तो हम देख सकते हैं कि द कंपनी वाज अगेन इन अ अप ट्रेंड. So from March we can see that after the crash of COVID the company was clearly in an uptrend. The stock was going up. So the stock price was above its 20 EMA as well as its 50 moving day average as well as its 200 moving average. But currently the company is consolidating, the stock is consolidating in a sideways trend as we can see from here. Just to validate the same, हम देख सकते हैं कि जो moving averages हैं वो एक flatten out हो रही हैं as we can see over here. 20 और 50 जो fast moving averages माना जाता है वो flatten out हो रही है. The 20 moving average is below its 50-day moving average, although both of them are above their 200 moving average. And if we talk about the stock is currently below its 20 and 50 moving average. However, it is very near to its 200 moving average, but उसके नीचे ट्रेड नहीं हो रहा है, currently उसके ऊपर है, which is a good sign. So अगर हम levels की बात करें, so as we can see in last 4 months, this is the support level, support zone जहाँ पे stock rebound हुआ है. As we can see in last 4 months, 3 times वो इस level को ब्रेक करने के लिए ट्राई कर रहा था बट इट वाज नॉट एबल टू ब्रेक इट. सो आइडियली दिस शुड बी योर बाइंग जोन. यहाँ पे सपोर्ट जोन है तो यहाँ से बाइंग पिकअप हो जाता है. सो इफ यू टॉक अबाउट दिस लेवल, सो आइडियली योर एंट्री लेवल शुड बी 2050 टू समवेयर अराउंड 2120. इस रेंज में आप स्टॉक को बाई कर सकते हैं. शॉर्ट टर्म टारगेट्स की बात करें तो योर शॉर्ट टर्म टारगेट्स इज समवेयर अराउंड 9 to 10%. तो उसको हम देखेंगे तो इट विल कम अराउंड 2322 एंड अबो. मिड टर्म टारगेट्स की बात करें तो समवेयर अराउंड 2470 विच विल बी अराउंड 16%. एंड इफ यू टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म टारगेट्स, अगर ये साइडवेज को वो ब्रेक करता है स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड, so it will have a big momentum and it will go somewhere around 2750 and above, which will be roughly around 30% from your buying price. So that's all from us for today. I hope you like this session. If you like this session, do like, share and subscribe. Stay tuned for the upcoming videos. Once again, thank you very much.